the end of the month of Rajab. And these months, as Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran, that there are 12 months, and amongst them 4 are blessed. 4 are blessed. And amongst those 4, this is the first one, Rajab, which is known as the month of Allah Jalla Majduhu. In actual fact, this is not the only one isolated month, but it is a set of 3, Rajab, Sha'ban and Ramadan. And the Prophet ﷺ mentioned that Rajab is the month of Allah subhanahu wa ta'ala, the Sha'ban is the month of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and Ramadan is the month of Ummah. What some of the Mashayikh, what they have said is, what does it mean that it is month of Allah? They've said it means that you should cleanse and purify your relationship with those other than Allah subhanahu wa ta'ala in this month, and establish a relationship, a sound relationship with Allah Azza wa Jal in this month. That's what it means, month of Allah. यानी आपने ये सुना है बार बार कि ये रजब जो है अल्लाह पाक का महीना है, तो मशाइख ने फरमाया इसके बस यही कहना है और आगे चले जाना है? नहीं, उन्होंने फरमाया इसका मतलब ये है, अल्लाह का महीना है, तो मतलब ये कि गैरुल्लाह से तल्लक को तोड़ो और अल्लाह जल्ल मजदहू से ताल्लुक़ को जोड़ो इस महीने में। ये मतलब है कि अल्लाह से ताल्लुक़ बंदे का जो टूटा हुआ है वो जुड़ जाए, वो जो गलत काम गुनाहों से ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है बंदे का, a person has established his relationship with sin and with harmful thing. What is sin? Sin is not something which harm Allah. Allah said, La yadurrallaha shay'a. Allah, nothing harms Allah. So that's out of question. हम समझते हैं कि अल्लाह का कोई नुकसान हो जाएगा गुनाह से, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होता। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ में, हदीस कुदसी में नबी अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि अगर तमाम बंदे फ़िरौन मतलब ये कि गुनाहगार बन जाएं और बगावत कर दें, तो अल्लाह पाक की बड़ाई में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आती, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है मखलूक पे। ही इज़ समद, ही इज़ नीडलेस, ही डजंट नीड एनीथिंग। सो अल्लाह पाक ने भी फरमाया ला यदुर्रल्लाह शैआ, कि कोई अल्लाह का नुकसान है, तो गुनाह फिर किसका नुकसान है? गुनाह बंदे का नुकसान है। सो व्हाट इज सिन? सिन इज समथिंग हार्मफुल, something harmful to whom? To you and humanity, and to you, your dunya, your body, your mind, your heart. It is harmful for your body, it is harmful for your heart, it is harmful for your mind, it is harmful for your nafs, it is harmful for your spouse, it is harmful for your death, and it is harmful for your grave, it is harmful for your day of judgment, it is harmful for your scales when you will be standing in front of your scales, and it will harm you when you will be directly face to face in the presence of Allah Jalla Majduhu, and it will harm you on bridge of Sirat, and it will also harm you in the hellfire. That is what sin is. It is not something which harms Allah, nor actually there is any good deed which benefits Allah. गुनाह ना अल्लाह को नुकसान देता है, वो नेकी अल्लाह को फ़ायदा नहीं। तो हम जैसे क्या कहते हैं, नमाज पढ़ो भाई, नमाज पढ़ो, ऐसे जैसे को अल्लाह की कोई खिदमत करनी, कोई अल्लाह को फीड कर रहा है बंदा, अल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, भाई नमाज पढ़ो, सुन्नत पे चलो, ऐसे जैसे नबी अलैहिस्सलाम पर कोई एहसान कर रहे हैं। भाई उनको कोई नुकसान नहीं, वो तो अल्लाह के हबीब हैं,
कोई उनके पीछे चले या ना चले, अल्लाह तो उनके साथ है, उनको तो इसकी हमारी ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें उम्मती को नबी की ज़रूरत होती है, नबी को उम्मती की ज़रूरत नहीं होती। उनकी तो सारी कायनात ही उम्मती है। तो इसी तरह जो है, सो वन शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ सिन। सिन इज़ समथिंग विच इज़ हार्मफुल, वो जो आपको नुकसान देगी। अब देखें ना, ये जो वायरस है वो कह भी रही है गवर्नमेंट के, भाई इट्स नॉट सो हार्मफुल दैट इट्स गोइंग टू किल एवरीवन whoever is infected. Maybe 10 people out of 100, 1 person out of 100. And some people will get, and even they say they don't know, and they will even be cured. They won't even notice the virus has come in. Some will be. तो उससे भी कितना बंदा डर रहा है, how a person is fearful. And what about those things which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam crystal clear in black and white said they are very harmful? What about those things? What about those matters? What about that punishment and things which are really, really painful so much that no one can actually escape from them? Here, even if a person gets the worst of disease, death will be escape. His escape. मौत उसको उसकी जान छुड़ा देगी, लेकिन वो अजाब, वो बीमारी, वो वायरस जो गुनाह का वायरस है, the virus of sin is such that even death, you don't have escape through death. You only go, it only becomes more worse when you go in grave. So here Allah Azza wa Jal is covering, Allah subhanahu wa ta'ala is forgiving, Allah Azza wa Jal is actually giving respite. Here sometimes sin cannot be seen so harmful, although it's harming your inner self, but apparently you do not get the full effect of it. But after death, as soon as you go to death, if there is a worldly disease, you get completely free from it. Cancer, AIDS, whatever, you're free from it. But once you have the virus of sin, virus of actually disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, death only makes it worse. The grave really become a place of horror and horrific punishment and torment actually the person. And the day of judgment even become worse for the person as such. तो इस वायरस से डरे कि जो अल्लाह से बंदे को दूर कर देता है, जो अल्लाह पाक से और जन्नत से बंदे को दूर कर देता है, जो बंदों को बंदों से दूर कर देता है। ये तो देखे दुनिया में परेशानियां थी, बंदे करीब आ जाते एक दूसरे, हेल्प करते हैं। All the world, many countries are cooperating with each other. Before many were enemies, now they are cooperating. तो दुनिया की परेशानी तो बंदे को करीब ले आती है बाज़ दफ़ा, but the sin and disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala even drives people away from you. Because the Prophet ﷺ said, he mentioned in one hadith that why do people fall out? Many reasons for that. There will be many reasons. Two people who love each other, be it husband and wife, be it brothers, be it brother and sister, be it two friends, be it two partners in business, be it two colleagues. The Prophet ﷺ said, why do they fall out? देखें ना, मैं इस पर गौर करना, आज हर बंदा, बहुत सारे बंदे इसका रोना रो रहे हैं, लड़ाई नहीं ख़त्म होती, ये होता है, वो होता है, बच्चों की लड़ाई, फलाने की लड़ाई, इख्तलाफात, disagreement, other things actually. There will be several reasons, but one reason which the Prophet ﷺ mentioned, he said that there are two people who love each other and then they fall out, but reason he said would be one of them have disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala outrightly somewhere, in somehow. आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो बंदे, स्पाउस मियाँ बीवी हों, बहन भाई हों, बच्चे हों, जो भी है, फ्रेंड हों, जो जुदा हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, इख्तलाफ, फरमाया कि एक वजह यह है कि उनमें से एक ने
रब की नाफरमानी की होती है, कहीं छुप के या कहीं सामने। और हमारा हाल तो ये है कि दोनों कर रहे होते हैं मिल के, कि जब आपस में सुलह है तो खुदा रसूल से जंग हो जाती है। यानी हमारा ये काम है ना कि जब आपस में मियाँ बीवी राजी हैं, वो बैठ के फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, सैर कर रहे हैं, नमाजें तय हो रही है, फिर अल्लाह रसूल के साथ उनकी जंग। और जब फिर शैतान फिर जब उन पर सवार होता है, जब वो सारी फिर जो है वो कहते हैं अब किसके पास जाएं, अब क्या करें, व्हाट शैल वी डू।